हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे से वीडियोस देख रहे होंगे और प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर योर नेक्स्ट गेट एग्ज़ाम। आज का हमारा टॉपिक है हाउसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हाउसेस में हमारा फर्स्ट टर्म है यर्ट, YURT, यर्ट। Yurt are a kind of primitive house जो कि एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी और एक कोनिकल रूफ का। ओके, अभी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज सर्कुलर इन प्लान। It has cylindrical walls, obviously because plan circular है तो walls हमारी cylindrical होंगी। अभी another feature is a conical roof of poles। poles को हमने एक के ऊपर एक स्टैक करके उसका एक कोन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है एंड वी हैव कवर्ड इट विद एनिमल स्किन और फेल्ट। सो इट इज हैविंग अ कोनिकल रूफ ऑफ पोल्स। and it is covered with felt। और एनिमल स्किन। सो इसी फेल्ट के बीच में यू क्रिएट अ गैप, अ लिटिल गैप यहाँ पर, एंड दिस एक्ट्स एज योर ओपनिंग। एंड यहाँ पे यू हैव योर एंटायर रूफ स्ट्रक्चर, एक रैंडम लैटिस में जिसको बाइंड करा हुआ है ऊपर से फेल्ट वगैरह लगा करके। So this is how your yurt looks. This is yurt for you. The second term is a mesa। mesa। अभी mesa क्या होता है? It is a flat topped structure, elevation में देखेंगे, with one or more cliff like sides। सो मेसा इज़ लाइक अ प्लेटो के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। फ्लैट रूफ है एंड यू हैव स्लोपिंग वॉल्स टूवर्ड्स साइड्स। इफ दिस इज़ द काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर ड्वेलिंग, इट इज़ कॉल्ड एज मेसा। मेसा के दो की फीचर्स है, फ्लैट रूफ फिर cliff like sides। The next term is pueblo। So एक pueblo is a multi-storied structure पब्लो इज़ अ मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर रहता है, कम्युनल लिविंग का स्ट्रक्चर है ये। मल्टी स्टोरी रहता है ये स्ट्रक्चर एंड यू हैव एन एंट्रेंस जहाँ पे पहले आपका लैडर से बाहर से एक एंट्री रहेगा एंड देन यू गेट इनटू द कोर्टयार्ड एंड देन रूफ के थ्रू बिल्डिंग के अंदर आपका एंट्रेंस रहता है। It is not from the ground floor, it is from the roof। So the key features are ये एक adobe structure है, adobe या stone structure। Secondly ये multi storied होता है। Thirdly इसमें entry होती है through its flat roof।
एंड लास्टली जो डेजर्ट के वैलीज़ होते हैं या फिर जो क्लिफ वॉल्स होते हैं, वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉमनली मिलता है. Okay, so our next term is a kiva. Kiva. So kiva is a structure जो या तो partially या completely underground रहता है. It is a community structure, a community hall or a gathering space. Suppose if this is my ground level, either my structure is entirely under it or is like a semi basement, and it has a congregation space, probably एक amphitheater जैसा space होगा, या anyway which is used for a community assembly or prayers or something like that. This structure is called as kiva. Kiva is partially or entirely underground. Structure, and it was used by men majorly for religious ceremonies or council. Okay, so after kiva comes tipi. Tipi or tepe. टिपी ये एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है. आपने वुड लॉग्स को एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे लीन करके एक यहाँ पर एक बेस फ्रेम बना लिया एंड यू कवर्ड इट विद एनिमल स्किन, एंड आपने एक ऐसे ओपनिंग जैसा यहाँ पर छोड़ दिया एनिमल स्किन में से. दिस इज़ योर एंट्रेंस. ओके, अब यहाँ पर टॉप में जहाँ पर आपके सारे लॉग्स या वुडन स्ट्रक्चर्स जहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वहाँ पर आपने उसे कवर नहीं किया, एंड दिस इज़ एक्टिंग लाइक योर वेंटिलेशन. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ अ टीपी. ये है हमारा टीपी. ये हमारा एंट्रेंस हो गया टीपी का. सो द की फीचर्स ओवर हियर आर अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर, second is animal skin is laid on conical frames of long pole. Third is there's an opening at the top for ventilation. एंड एक फ्लैप स्टाइल डोर रहता है.
This is called a tepi. The next structure is a wigman. विगमैन। अभी विगमैन एक राउंड शेप्ड रहता है, राउंड शेप स्ट्रक्चर रहेगा, मेड आउट ऑफ वुड। एक सपोज हे सैक जैसा स्ट्रक्चर समझ लो आप। अभी दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज मेड आउट ऑफ वुड एंड उसको फिर दिस इज लेड विथ एनिमल स्किन एंड डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट। ये आपकी कुछ ओपनिंग है, सिमिलर तरीके से फ्लैप टाइप ओपनिंग है। यहाँ पे ये हमारा ग्रास से या एनिमल स्किन से कुछ इस तरह से मैंने कवर कर दिया है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को वुड से कंस्ट्रक्ट करके। एंड दिस इज़ हाउ दिस स्ट्रक्चर इज मेड। सो round or oval shaped plan, and poles overlaid with barks or rush, ट्री बार्क से या फिर रश मैट से या फिर एनिमल स्किन से। The complete wooden structure is covered with all these things. The next term over here is a hogan. Hogan. A hogan is constructed out of earth and logs and covered with mud and sod. Sod क्या होता है? Sod is like suppose यहाँ पे मेरी पूरी ग्रास मैंने प्लांट करी हुई है एंड ये ऑफ कोर्स हमारी सॉइल या अर्थ है एंड इफ़ आई एक्सकवेट और डिग आउट सच दैट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक मैट के फॉर्म में निकल के आ जाए, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सॉड। सो होगन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करते हो विच इज़ मेड आउट ऑफ लॉग्स, वुड लॉग्स एंड इज़ कवर्ड विथ सॉड। ये होता है आपका एक इस तरह का एक प्लेटो शेप का स्ट्रक्चर रहेगा आपका। ये आपके वुड लॉग का फ्रेम है एंड दिस रूफ मटेरियल इज सॉड। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ होगन। होगन होगन इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ earth and logs and is covered with mud and sod. Okay. The next term is a totem pole. Totem pole. टॉटम पोल इज़ अ पोल जो एक कम्युनिटी के कॉमन स्पेस पे आप इस्टेब्लिश करते हो एंड इस पोल पे उस कम्युनिटी के लोग या बिलीफ के जो भी कैरेक्टर्स हैं, एविडेंट कैरेक्टर्स, उन सब के फेसेस या कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर आप इस पोल पे एनग्रेव करके रखते हो। सपोज यहाँ पर एक फेस है, कुछ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है,
इस तरह से आपने इस पूरे पोल को सेक्शंस में डिवाइड करके इस पे फेसेस और प्लांट्स और एनिमल्स को स्केच एनग्रेव करके रखा है. This complete pole is called as a totem pole. So इसकी exact word to word definition is an animal or plant or natural object serving as an emblem Okay, so we discussed that totem pole is a pole that has animal, plants or other natural objects engraved on it, and they are serving as an emblem of that particular family or a clan. Now this particular pole is erected in front of the house or in the common area of the clan, common congregating area of that clan. Okay, so our next term is a trullo. Trullo, Trullo, trullo. Trullo. अभी ट्रूलो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ लाइक एन इंडियन टेम्पल. एक सिलेंड्रिकल या स्क्वायर बेस रहेगा. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ मेड आउट ऑफ स्टोन्स एंड एक कोनिकल उसके ऊपर रूफ रहेगी. All this is made out of stone, so it is thick in the section. And structure is somewhat like this. This complete thing is whitewashed. And उस पर फिर figures paint किए जाते हैं with natural paints. So the key points that we gather from here are circular stone structure, and conical roof structure which is corbelled. And the third point is whitewashed with paints on it. Okay. So after this we come to certain parts of a Russian household, typical Russian household. Majorly इसमें 3 important terms है. मैं अगर section में देखूँ तो it is more like that of a courtyard planning. If this is my roof, section में ये स्लोपिंग स्ट्रक्चर है, ये मेरा रूफ है. दिस इज़ माई कॉरिडोर, दिस इज़
my atrium, and this is another corridor. ये मैंने section में cut किया. यहाँ पे you have your water body, and जो rain water है वो इस this place does not have a roof. अगर ये courtyard है तो यहाँ पे जो भी रेन वाटर है सब रूफ से ड्रिप हो करके इस वाटर बॉडी में कलेक्ट हो रहा है. दिस इज़ द बेसिक अरेंजमेंट. नाउ दिस ओपनिंग, ओवरऑल ओपनिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लूवियम. एंड जो ये स्लोपिंग रूफ है, स्लोपिंग पार्ट ऑफ द रूफ, दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्प्लूविएट. एंड ये जो डिच है छोटू सा जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड इम्प्लूवियम. Okay. So the next term over here is a Dutch house. अभी Dutch house कैसे different है from all the other houses? Dutch house की गैब्रल रूफ होती है. गैब्रल रूफ इज़ बेसिकली स्लोपिंग रूफ जिसमें कि दो स्लोप्स हो. एलिवेशन में देखेंगे तो फर्स्ट स्लोप इज़ दिस, and then you have another slope. This kind of roof is called a gabrel roof. ये एक gabrel roof है. एक मेरा ऐसा structure which has gabrel roof, and जो eaves हैं, eaves of the structure are curved और जो पोचेस हैं वो लॉन्गर साइड में है. इफ दिस इज़ माई प्लान, you always have your porch on either side or either of the long sides. Then this type of house is a Dutch type house. Okay, so our next term for today is dog tot या breezeway. डॉग टॉट या ब्रीजवे क्या होता है? इफ़ एट ऑल मेरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक मेरा ड्वेलिंग या कोई भी हैबिटेबल स्ट्रक्चर ये है, एंड एक मेरा हैबिटेबल स्ट्रक्चर ये है. इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एक रूफ है एंड देयर इज़ नो वॉल. देन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ कॉल्ड डॉग टॉट या ब्रीजवे. Dog tot या breezeway. So it is a porch or roofed passageway open on sides. और या फिर
it connects two buildings or two parts of one building. So this is all for today. Thank you so much for watching. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है then you can please like, share and subscribe. Thank you so much.